तो मैं आपको बता रहा था कि एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग which she calls as Inspiration and Chai. I don't know why she writes chai, but Inspiration and Chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now, that I will have no fear, because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नोट लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे, आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिज़नेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग, इज दैट कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। Dr. Chandra, we have with us Professor White, who is from Stanford University, a great philosopher, professor of computing, and he is the one who has given many definitions to the word. He would like to ask you a question and comment on this topic also. Of course. Most welcome. Thank you. If I understand, you're asking about the last 24 hours of life. What do you feel as though the role of communicating with your family is? Because I think in the last 24 years of my life, the important thing for me is not what I might have accomplished materially
or any sort of legacy that I feel is my have, the most important legacy I will have is from my family, from my children. What would you do with your family? What would you like to do? What I would really, I think, most to do is consider how my family remembers me, how my children or my grandchildren. You will communicate with them, which you have not been communicating throughout the life. I have been communicating with them. Okay. But still, I could be cognizant of the fact that I've made mistakes, in terms of that communication. So clearly, how do I rectify those mistakes that I've made? Because I'm saying that don't wait for that last 24 hours. You should do it, that thing, right from this moment onwards. And continue to do that. As I say, that treat that today is the last day for rest of your life. Then you will not commit that mistake. That's what we believe. So you're effectively saying live each day as though it were the last day of your life. Absolutely. And as opposed to see, being, what I was confused, as opposed to thinking about each day is the first day of the rest of your life, treat each day as possibly the last day of your life. Because only when you say that today is going to be my last day is when you will think that tomorrow is first day of my life. Okay, thank you. Things continue. Because, sir, in Indian philosophy, we believe that there is a next life and there has been a past life. And we also believe that where I end this current life is where my next life will start. If I finish with a guilt that I made mistake, I carry that guilt, I'll take birth with that guilt itself. If I go in pain, I'll take birth in pain. That's the philosophy we believe.